Hello, myself Dr. R.K. Verma, Government CLC College, Patan District, Durg. In today's lecture, we read on topic Ramsay Theorem of Paper 5 Graph Theory, Unit number 1 for M.Sc. First Semester Mathematics. In this lecture, we will prove the Ramsay Theorem for complete graph. इसके पहले के लेक्चर में हमने बताया था कि R33 इज इक्वल टू 6, जहाँ पर R रामजे नंबर है, 3 क्लिक संख्या है और 3 इंडिपेंडेंट संख्या है। क्लिक का मतलब है कंप्लीट सब ग्राफ ऑफ ए गिवन ग्राफ, और इंडिपेंडेंट सेट का मतलब है उसके वर्टिसेस आपस में नॉन एडजेसेंट है, उसे हम वर्टिसेस कहते हैं। तो आज का जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो इस प्रकार से है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर के एंड एल देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन आल्सो कॉल्ड रामजे नंबर एन इक्वल टू आर के एल सच दैट इफ द एजेस ऑफ के एन आर बाइकोलर्ड with color 1 and color 2, then Kn has either an induced complete subgraph Kk, all of whose edges are colored by 1, or an induced complete subgraph Kl, all of whose edges are colored by 2. One can easily see that RKL can be thought of as the smallest integer n such that every two edge coloring E1 and E2 of Kn contain either a complete subgraph of k vertices, all of whose edges are in color 1 or blue, say, or a complete subgraph of L vertices, all of whose edges are in color 2 or red. Thus Kn is made up of two colors, blue and red, in which have Kk monochromatic clique of color blue or Kl monochromatic clique of color red. Here it is shown 6 vertices graph, complete graph K6, in which we observe that here is a clique made up of vertices 1, 3 and 5 and a independent set from vertices 2, 4, 6. रामजे थ्योरम में हमने देखा था कि कम से कम 6 वर्टिसेस चाहिए ताकि या तो एक क्लिक K3 बन सके या एक इंडिपेंडेंट सेट 3 वर्टिसेस का K3 बन सके, अर्थात R33 इक्वल टू 6। इसी प्रकार एक और चित्र है, यह कंप्लीट ग्राफ 9 वर्टिसेस पर आधारित है। R34 इक्वल टू 9, यहाँ पर 3 क्लिक है, नंबर ऑफ क्लिक्स। हम यहाँ देख रहे हैं कि वर्टिसेस 1, 2 और 7 एक क्लिक का निर्माण करता है कंप्लीट K3 सब ग्राफ, और 4 यानी 4 वर्टिसेस 3, 5, 8, 9 ये एक कंप्लीट ग्राफ K4 को बनाता है। मेन थ्योरम, प्रूफ ऑफ रामजे थ्योरम फॉर कंप्लीट ग्राफ। लेट ए कंप्लीट ग्राफ ऑफ n vertices Kn is colored by color 1 or blue and color 2 or red. Here cardinality of Kn is n. Equation number 1 say, by basic Ramsay theorem there exists positive integer n belongs to n such that if x, here Kn, is a set of cardinality n, then for any k color 1 blue of x r there is a monochromatic subset of x with cardinality s. यहाँ पर एक कंप्लीट ग्राफ के एन दिया गया है, x के रूप में इसको लिया गया है। इसके 2 भाग हम बनाते हैं, पहला भाग y है सबसेट और दूसरा z है। ये जो y सेट है वह क्लिक के को रखता है, और दूसरा जो सेट है z है वह इंडिपेंडेंट सेट के एल को रखता है। पहला सेट का एजेस कलर 1 से रंगे गए हैं और दूसरे सेट का एजेस कलर 2 से रंगे गए हैं। आगे फॉर x इक्वल टू के एन विथ कार्डिनलिटी ऑफ x इक्वल टू मॉड के एन इक्वल टू n, अ पॉजिटिव इंटीजर n इज सच दैट देयर एग्जिस्ट ए सबसेट y सच दैट मॉड y इक्वल टू k, पॉजिटिव इंटीजर, इक्वेशन नंबर 2, and y is monochromatic set suppose colored by 1.
Similarly, there exists a positive integer n such that there is a subset z such that mod z equal to L is equal to positive integer. Equation number 3. And here z is monochromatic subset, suppose colored by 2. Using the theorem that every complete graph has complete subgraph for any least positive integer n, so that y and z are complete subgraphs of order k and L respectively, such that condition first n equal to r kl and condition second either kk is colored by 1 or kl is colored by 2. Equation 1 and equation 2 are defined for Ramsay theorem. Therefore, this completes the proof. Now we come to an example. Here V1, V2, V3 are three vertices. V1, V2 is colored by color 1 and V1, V3 edge is colored by color 1. V2, V3 is colored by another color 2. This is a complete graph. Its subgraphs are V1, V2 which is K2 colored by 1 and V2, V3 which is colored by edge, colored the edge by 2, color number 2. Since K3 has a complete subgraph K2 either colored by 1 or by 2, where K3 has a monochromatic complete subgraph K2 for least integer n equal to 3. This completes the proof. अभी हमने कलर 1 और कलर 2 के रूप में रामजे नंबर से संबंधित थ्योरम को देखा। यदि हम उसे क्लिक और इंडिपेंडेंट सेट के टर्मिनोलॉजी में कहें तो थ्योरम इस प्रकार से बनेगा। गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्टेटमेंट ऑफ रामजे थ्योरम इन टर्म्स ऑफ क्लिक एंड इंडिपेंडेंट सेट, गिवन एनी positive integer k and l, there exists a smallest integer n is equal to r kl, such that every graph on r kl vertices contains either a clique of k vertices color 1 in kk or an independent set of l vertices color 2 in complete graph kl. The number n equal to r kl is called Ramsay number. Hence both the theorem are equivalent. Thank you.